So hey everyone, today we are having Utkarsh and he is having around 2 years of experience in CDM and rest of the things Utkarsh gonna share. So Utkarsh, can you introduce yourself? Hello everyone, my name is Utkarsh. I have recently completed 2 years of experience in CDM programming and I have done BTech in electronics. After completion of BTech, I undergo the SAS internship and training. Then I continue as a programmer in the CDM department. So Utkarsh, what is the educational background eligibility to get job in CDM? Who like which people from which domain they can? Actually, CDM is mostly divided into two parts. One is the core CDM. In core CDM, they will mostly hire the people from the pharma and bioscience department, like B Pharma, BSc, biotechnology. So because it is the core part. And the second CDM is the CDM programming. So in programming, we can have multiple background like BTech, engineering, and pharma and BSc. Okay. So So when you are saying that CDM is divided into two divisions or two parts, so can you explain a little bit like what are the roles in each of these parts, if you have any idea? So in CDM, like the first part is the core CDM. So in the core CDM, their basic job is to the data storage and data manipulation. Like data manipulation they cannot do, but if there is any query or is the data entry is done in the wrong way, so they will look at the data oversight. Means they have to completely from the start to the end phase, they have to completely work on that particular study for the data gathering. So this is the core CDM. And in CDM programming, we will help that data to get any errors or any incorrect data by the use of programming. This is a basic difference. Now, can you name some of the roles? Is there any difference in the roles, or all the people are like known with the same role? So in CDM, like there are roles like core CDM, there are roles like clinical data analyst and clinical data manager, clinical data associate, like as per depend on the role. And in CDM programming, we have the role like it depends on the company as well. We have the role like programmer, associate programmer, programmer analyst. There basically programmer role will be more in CDM programming. Okay. Now, if you have to choose, now let's suppose you are having experience, so you know like within these roles in CDM, you know that which are the good ones. So if you have to prefer, which one you will prefer? You are working on the same that one, or it can be different? No, actually it depends on your background also, because as I said earlier, in the CDM department, the core CDM, so they mostly take for B Pharma and BSc students in the life science field. So as I am a like BTech student, so I have from the engineering field. So in the CDM, I have mostly CDM programming role is preferred for me, because as I am from the tech background, so core CDM does not suit for me. So for me, CDM programming is best. So in terms of salary, is there any use difference between the salaries of core and this one, or like as part of salary, like as I have not asked from them, but I think the salary are as per the level for the initial phase, it is same only, not much difference. Okay. But after later on, if you have like good experience, then it can differ. So like for the programming and salaries are more, is it? Yes, after some experience, yes, it will be like mostly like 10 to 20% more. Now you are working in the CDM department. We have started like inside the CDM itself, there are core and another programming one. Like if I'll ask you, what is the salary range for CDM programmer? So can you share some idea for fresher? What will be the salary? So like as a fresher, you can expect around 3.5 to 5 as per the company, like how the company. And what can be the salary? Like let's suppose if you're having 2 years of experience, if you can share the range. So it can approx 7 to 10, between 7 to 10. Okay, so if someone is working in the CDM programming, so he can assume a salary from 7 LPA to 10 LPA if you are having 1.5 to 2 year of experience. Basically minimum 2 years. Okay. Now we have discussed about the educational background. Now coming to growth. Now you are from engineering background, as you are saying, and on these roles most of the people from pharmacy or these backgrounds, they are preferred. So do we see any differences in long term, like once you are growing, so your salary is not growing because you are from different background or engineering background? Like in any industry, if you are like experienced in that field,
So after Mm-hmm. sometimes like your background does not matter, your experience, your qualification, that matters in any field. Okay. So once you got hired, it doesn't matter from which background you are. Once you got hired, then the growth gonna be same. It doesn't matter It people are does not from which matter. background. And does it affect if you have done MBA or masters? MBA does not have effect because MBA it is completely different. Mm-hmm. Both MBA is Mm-hmm. for something like for business and planning and all that. That you can do after you become the manager after 10 to 15 years. Not it will not affect Okay. now. So now this is the next question. Even after becoming a manager, do you think like is it worth like you're working with them maybe? So are they doing or have you seen people around you? Have you ever If you observed this things? like at the manager level also it is not like very compulsory that you have to do MBA. But if you go for above manager level, so at Hmm. that time the company will sponsor you for the MBA because you have to go in the planning. Because now Okay. mostly you are the manager and you have to take the complete responsibility. At that time of time, like after 10 to 15 years, you will like get to know like what you have to do. So Hmm. till now you don't have to care about that. The company will sponsor. So after 10 to Mhm. 15 years, like it is like very different, so we cannot predict like what we have to do that time, but mostly for now like MBA does not affect much. Now, Utkarsh, is there any difference while the hiring if someone have done, uh, graduation, if someone have done masters? So, is the companies are like they are preferring more master students or graduate students? It depends on the mostly if you are applying from outside, like not from the college or something, so they do not see that you have done masters or what, they just see Mhm. your skills, like what you have, Mhm. and basis of the interview. Okay. In your case, let's suppose you are working in a company, and so in that company, what do you see around the people in working in your department? Are they have done masters or they have done graduation? How it is? Mostly are from graduation only, like B Pharma, B Tech, BSc Okay. Statistics. Why I'm asking this, Utkarsh? I think recently, I don't remember CNOs or JSK, but I think it's been 6 or 7 months. They have some openings for this statistical programmer role, and they have in the requirement they have mentioned like the masters like preferring. It was not kind of mandatory, but they were preferring more. Some companies depends on the company policy also. Yeah, but it's like the rare cases. Like it's not like every company was doing the same. This is why I'm asking you this question. Now, Utkarsh, coming to you got a job on this CDM role. So how was your journey? Like you took a training, and after the training, let's suppose I have trained you at that time, and after that you have a separate journey, right? After the training. So how was the journey for you? It was smooth or little difficult? Actually, after training, it is a little bit tough because doing Mhm. training and getting a job is a little bit different. Because for Okay. searching a job from outside the like company and through referrals or LinkedIn, we have to like do a lot of research and lot of apply we have to do. Then we get the opportunity for any interview. Then we have to crack that interview. So it is Okay. little bit tough part. So it means you're saying like the training part can be easier compared to getting interview and cracking it, right? And No, even though I searching a agree job that and getting an interview is a little bit tough. getting the interview is the difficult part rather than cracking, right? Even I do agree with this. If you can go back and improve some of your mistake, because right now you're having experience. So in the searching part, if you would like to share like what are those things you're doing as a mistake and you could have improved and it could have increased your number of opportunities for getting interviews. So is there for, anything you would like to share? for searching, we mostly depend on the LinkedIn only, LinkedIn, Okay. Naukri, because as a fresher, Mm-hmm. mostly recruiters want experienced person only, and there are less job Mm-hmm. opportunity. So as a fresher, like we should mostly depend on LinkedIn and Naukri.com. So we have to use it extensively, and we have to update our profile regularly and interact with people. And some people are which are very active in their own company, so they also give some job insights like which jobs are coming in the market and what. So mostly I will suggest every fresher for this. Okay, now this was about the platform, like which platform as a fresher one should prefer, right, for getting job. Now, I would like to know about you, like which platform you got interviews, or would you like to So share? like this only, I just apply on LinkedIn and share Mm-hmm. my resume to many profiles and many Mm-hmm. job openings. So I also don't know from where I get the interview, but I get the call, then I attended Okay. it. But we have to Okay. try, only that we can get. Mm-hmm.
So for platform, you are suggesting like LinkedIn and Naukri. Okay. These are the best. Now, would you like to share some tips someone can follow and they can do better, like in the applying part? So I have tell na, like we have to like make lot of connections, and we have to very active on the both the platform, and we have to Mhm. reach out the recruiters, managers, Mhm. and any other people who are in our network to get our Mhm. resume highlighted in that company. And Mhm. there are a lot of job openings, we have to apply on that, then only Mhm. you can get. It takes time little bit, but you have to apply. Now, this is something, a very fresh question I'm asking to you. Sometimes, fresher is having a question, Utkarsh, that कि ओपनिंग वेबसाइट पे लाइक कंपनी में किसी ने बताया कंपनी में ओपनिंग है बट ऑन द वेबसाइट इट इज नॉट शोइंग और किसी ने पोस्ट भी नहीं डाली कंपनी ने या एचआर भी नहीं डाली सो हाउ दैट हैपेंस डू यू थिंक दिस हैपेंस दैट ऑफिशियली कंपनी इज नॉट पुटिंग दैट पोस्ट बट देयर इज सम रिक्रूटमेंट 1 or 2 or 3 Sometimes vacancies are there. sometimes there are very less vacancies. So if they will enter this details in website also, but there are a lot of people who are applying, so they will close very fast. So they take the internal process. So the profiles or resume which they have, then they will search for that candidate and they will call for the interview. Okay, so it means that is correct. Sometimes if less interviews are there, so with their referrals or from inside, they're gonna take interviews. For fresher, like it is like mostly I have seen like this. For experience, they will, but for fresher, like because as a fresher, they want they don't want like lot of number of resumes in their web. Now, this is out of curiosity. I'm asking Utkarsh. When actually I got a job as an statistical programmer long back. So initial first year, I was searching a lot about salaries in India and in US and in UK. So have you ever tried like looking for the salaries? What will be the salaries of a CDM programmer after 5 or 10 years? Or do you have any idea what can be the average salary a CDM programmer can get within 5 or 10 years? So it depends on the company also. Like I cannot say like all companies are same. Like some are small, some are mid-size, some are big. So salary like minimum it will be 15 to 20 like approx after like such experience. How was your work-life balance within these 2 years? Is it difficult or is it manageable? How is it? No, it is like average, not very difficult, not like very simple also. So at the starting, like we are in the learning phase, so we have to like learn that technology and lot of things are there internally also. So after some time, we will like grasp into that field. So we will gradually manage ourselves, like how we are giving that effort and how we are doing that things. So it totally depends on us. So if I have to ask this question, how was your journey like within these 2 years? Initially, do you felt like you are giving more hour and now you are giving less hours, or is it same like earlier also you are giving same number of hours and right now also? Earlier, like in the earlier phase, like I have to give more hours on my learning purpose. But as we gradually learn, so now I have to focus on its like implementation. So it depends on my like what is the work I am getting. Sometimes it also happens like we are getting less work also. Sometimes it can be like we have to give our deliverables and we have to focus on our improvement also. So it will go up and but as an average, it will be average only. Now, by asking this thing, I got another point that what is an average hour a CDM programmer give to the work? Like, is it 4 hours? Because, if 7 hours is an official working hour or 6 hours, we won't give that entire time, right? Continuously. There will be some average duration you might be actively giving. That will be active hours. So is it 5 hours? Is it 6 hours? Is it? So like it depends on a work. Suppose sometimes you have to do programming, and other than programming, you have other internal work also. Like you have to fill the some sheet, QC sheet, and all these things. So it depends on a work, and but on an average, you will give like 5 to 6 hours. And if you want to learn something, you can learn also. In every field, it is not only programming that you have to do only programming only. Some like other internal work also you have to do. So this is also a part of your job. So what are these other internal works, if you can give some clarity? Other internal work, like if you have completed some work, so you have to fill that in some separate sheet, and you have to complete your trainings, you have to fill the time sheet, and if any extra work QC or any work which is given by manager, so you have to do that also. And from past few years, a lot of people, they are interested in like work from home, or can we get work from home? So how about the CDM? Can a person who is working in CDM programming team, he can assume work from home? So it totally depends on your company.
When I joined that time, it is like Corona a little bit. So during initial phase, I get work from home for 6 months. Then, as per the company policy, I have traveled to Bangalore for my work location. And after some time, like currently, I'm also doing work from home. So it totally depends on your company and your manager. So we cannot assume that always we will get. But after some experience, you can expect. Minimum you can expect. Okay. Let's suppose even if someone is not having work from home, but if due to some need he needs work from home, so he can avail easily in CDM, or how it is like? So it depends on your company and manager. Like some companies with their some strict policy, so it depends on like how they will. So it is not a like a very like straightforward answer. So because every company has different policy, na. So we have to like at the starting phase we don't have to like go in that only that we are getting. So it depends like on the requirement also. So here what I have observed, Utkarsh, because when I was working, so along with me, when I got hired, along with me, I think overall total 12 people got hired. 12 or 14, I don't remember. So it was around 14 people got hired. And after some time, what I have observed, most of them are like working remotely. After 1-2 years, most of them. So what I have observed a pattern that initially you have to assume that you have to work from office. But once you get experience, if you need work from home, you can opt that. And again, it depends upon company and manager. But if you have some experience, like 1-2, the greater experience you are having, the more trust is there between the company or between the manager and you, and the more flexibility you give. It depends. This is a pattern I have observed. So once you get 1-2 years of experience, you can easily, smoothly get, if not fully, then like let's suppose if you want work from home for 1-2 months or some months, one can take. But yeah, it's depend upon the company and manager, as you told, and the year of experience one is having, because the more year of experience you are having, you don't take work as a timeline, you take it as a responsibility. That's true. So, and manager is interested in the output, not in the number of working hours you are putting in the timesheet. So this is what I have seen. Now it's true. Yeah. So now coming to the next thing, Utkarsh, like how about the technologies? Nowadays we are hearing a lot that things are quickly changing in the programming industry. Softwares are getting upgraded, and being a statistical programmer, now you can see on the statistical programmer role, R is aggressively used. If not aggressive, they are trying to use R and Python as well. So you are also in the programming in CDM, right? So currently you are working with SAS. Now, how about the CDM? Like in CDM, you are working with the SAS. Is there also in CDM this thing? Are there like R and Python? Is there using? So currently in my organization, we are using SAS only. We are not yet switched to any other language. Okay. But in future, if anything, then we have to adapt all that also. But now it is SAS only. Okay, so in your organization, you are using SAS only. So if you are comfortable, would you like to share your company name, in which company you are working? So it is Fortria, formerly LabCorp. Now it is Fortria. Okay, so you haven't seen in any of the department they are using R or Python, like in your CDM? No, CDM, in my CDM, I have only seen SAS only. So as you are seeing this, Utkarsh, like this R and Python thing, so have you ever got into like this dilemma that should I learn, or are you planning to learn? How is it? Yes, if it demands like in my job, so then we have to go. But currently, currently I have not seen, then I will stick to SAS only, because it is the basic. So if in future it depends like what is the market scenario and what is the condition, then we have to go for that also. And as you're working on this role, CDM, so these are global roles, right? In each of the country you can find these roles, CDM, statistical, all these roles. So have you ever thought about that going abroad, or you have this? Currently, like I am happy in India only. But if I get any chance, so if you get an option that to choose living with your family in India and or moving abroad, what will be your first choice, Utkarsh? It is like it depends on our personal wish. We cannot like copy others, so I will like to stay in India only. Some people have different ambitions, but for me it is different. Can you share which tools you are using as a CDM programmer? Yeah, CDM programmer, we will use SAS only because we are in the programming field. But the data which is coming from us is from different tool. This is used by core CDM. So we have to get the data from there, and we have to use only. And one more thing, Utkarsh, initially we have discussed, but right now the freshers are very much concerned about the competition. So what's your thought on this, and what you would like to share to freshers who are feeling this? There is very high competition and a fear of
getting interviews and getting job. This is the like same as I have seen most of us. But what we can do, we can improve we can improve much if we have learned like SAS only. So we can learn some additional things also like clinical data and all. So it will give like more advantage because interview is not in our hand. But if we have some extra information, so it will be like more beneficial to us. That I will suggest. So having more information and be consistent on whatever you are doing, like either it's practicing or solving question or applying for jobs, and another can be making connections actively, as you shared initially. So I think working on these things in a consistent way can get the result. But what I feel, Utkarsh, most of the people leave this journey because of not having the patience and consistency. And yes, finding a job is a little bit hard journey for me also as well. But like if you want, so you have to go in that pace only. But sometimes it can take like 6 months. Sometimes for some people I have heard that it can take 1 year also and 2 years. Yeah, what I feel, Utkarsh, that once we see something, like you have also decided someday, you might have decided that I want to make career into this SaaS or CRO industry. After like thinking too much, we come to a conclusion that I'll start this. And right now we all mostly look for a career which is good career, right? The journey we start after thinking a lot and coming to a conclusion, and even we do the training and complete the training, but the real the journey starts from once you start applying for job. And at that time, self motivation, consistency, these things are very important, because now you are alone. Everyone thinks about the competition and all those things, but what happens, let's suppose if 100 people are there, Utkarsh, I'll share you a pattern. अगर 100 लोग कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, 100 में से 30 या 20 ट्रेनिंग के दौरान ही इनएक्टिव होना शुरू कर देते हैं. मैंने कभी 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं किया, बट मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि 10 या 5 को भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो क्या पैटर्न है. 100 में से 20 अनएक्टिव हो गया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही. अब सीधी बात है, अब उनकी ट्रेनिंग ही टाइम पे पूरी नहीं हो रही, तो उनकी जर्नी लंबी होने वाली है, until unless they are completing one thing so that they can move to another. और फिर रिमेनिंग कितने हुए, लेट्स अज्यूम 70 पीपल आर देयर रिमेनिंग, जिन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से पूरी की. बट विद इन द 70 सम पीपल आर लाइक दे क्विकली गेट डीमोटिवेटेड, और या बहुत जल्दी सेल्फ डाउट करने लगते हैं ये कैसे होगा, और बहुत ज्यादा या कंपटीशन से डर जाते हैं. So they'll try 1, 2, 3 months and again they'll go out of, and these cohorts are like out of 70, this kind of people are 30. 30% थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद और मार्केट को देख के डर घबरा के they'll leave the journey. And 50% people will try little bit, work on it, थोड़ा ट्राई करेंगे और उसके बाद एक सर्टन थोड़े से लिमिट के बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे. लास्ट में घुमा फिरा के बचते हैं उत्कर्ष 30%, जो कि बिगनिंग से लेके अभी तक कंसिस्टेंट थे, यहाँ तक आए थे, एंड दे गेट द जॉब. और मार्केट में उसी एक टाइम पे इतनी वैकेंसीज होती है, मार्केट कैन कंपनसेट 30% ऑफ पीपल ओनली एट अ टाइम, राइट. एक बार में जब इंटरव्यू निकल रहे हैं तो इतने ही बंदे हायर कर सकते हैं मार्केट, क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो 100 वैकेंसीज कभी नहीं होती एट अ टाइम. एक टाइम पे मेरे ख्याल से 100 लोगों में से मार्केट 20 या 30% को कंपनसेट कर सकती है, रिमेनिंग को फिर अगले टर्न का वेट करना पड़ता है जब अगली बार हायरिंग निकलती है. सो व्हाट आई फील, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यू आर लर्निंग अ टूल एंड you want a job, you need to be very consistent during the journey from day one. You are starting a new journey and that gonna change your life. What I feel, good career, it's not only change your life, it changes your generations. अब आपकी आगे वाली जो generations होंगी वो better ही करेंगी, until unless उसमें से कोई बहुत खराब ना निकल जाए. That's a worst thing. So they gonna do better only because आपके पास already एक better level का knowledge है. आपने एक standard create कर दिया अपनी family के लिए, coming generations के लिए. आपको like कोई भी अगर कोई चीज सीख रहा है तो it's not only about the training and the getting job. You should take it as a responsibility that what else I can do from my end. मैं एक सजेशन देना चाहूंगा. Suppose we are doing training and we are finding a job. Suppose we are searching for the statistical programmer. I am also searching for that only. But if I didn't get, so the job which I am getting, अगर वो job अच्छी फील है तो हमें ले लेनी चाहिए as a fresher level. हमें मतलब जो भी मिल रहा है वो ले लेना चाहिए अगर वो अच्छा है. Suppose I am in the CDM only, लेकिन उस समय मुझे यही मिला तो मैंने उस समय ले लिया. If we have the potential, we can convert internally also. Because कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ ले लेना ही अच्छा है, खाली बैठने से अच्छा. किसी अच्छी कंपनी में कोई अच्छा रोल मिल रहा है तो वो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अंदर हमें भी नहीं पता कितने सारे रोल्स हैं, हमें भी नहीं पता कि ये
CDM के अंदर SaaS यूज की जाती है, क्योंकि एज अ फ्रेशर लेवल वी आर द रॉ मटेरियल, तो हमें भी नहीं पता कि हम किस चीज में यूज हो सकते। तो एक बार हम अगर कंपनी के अंदर एक बार हम एंट्री कर लेंगे तो हमें फिर अंदर ही अंदर नॉलेज होने लगेगी, अंदर और कनेक्शन बनेंगे, दैट विल हेल्प इन द फ्यूचर। तो अगर एक जैसे सपोज सम रोल्स आर लाइक CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, स्पेशली बी फार्मा BSc स्टूडेंट, दे कैन हायर इन दैट फील्ड। तो अगर वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज उन्हें वो नहीं मिल रहा तो दे कैन फिल दिस आल्सो CRA। वो उनमें भी बेसिक्स पूछते हैं, उनमें भी तुमसे मतलब कुछ हार्ड चीज नहीं पूछेंगे। अगर वो जॉब भी मिल रही तो ले लेना चाहिए, मतलब कि हमसे स्टैटिस्टिकल तैयारी कर रहे हैं तो हम वो ना ले तो ये लाइक इट्स अ नॉट गुड एन ऑप्शन। अब वो जॉब भी तुम्हें मिल रही है किसी कंपनी में एक डिसेंट सैलरी पे, तो उसे ले लो, फिर अपनी तैयारी करते रहो। सो उत्कर्ष, यहाँ पे मेरे साथ लाइक कुछ I'll share you some real incident. So being a trainer, स्टार्टिंग में तो मैंने ये जर्नी बहुत एंजॉय की, राइट? लाइक यू गेट रिस्पेक्ट and you are bringing something on the table that is changing the life of others, right? लेकिन धीरे 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 जब मार्केट कैप पे आता है, कैप यानी जब मार्केट साइकिल लो होता है, तो you see a lot of people in pain, right? I see a lot of people, students are not getting entry at some point of time, or at another point of time. एक recent ऐसा हुआ था कुछ महीने पहले कि अचानक से 7 स्टूडेंट्स हायर हो गए विद इन द मंथ। इंटरव्यू तो काफी लोगों को मिले, लेकिन विद इन द मंथ 7 स्टूडेंट्स हायर हो गए सेम कंपनी में। सो देयर इज अ पैटर्न। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद टाइम कि मेरे लिए भी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज हुई। इनिशियल टाइम पे जैसे मैं सैलरी चेक कर रहा था कंपनी में, या उसके बाद आई वाज गेटिंग द मोटिवेशन जब स्टूडेंट के सिलेक्शन होते थे, एंड आई गेट डीमोटिवेटेड जब स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होते थे, जब उनसे मैं ये चीजें सुनता था। एंड समटाइम्स आई स्टार्ट टेकिंग इट एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो नहीं हो रहा था, और मेरे नेचर में फ्लक्चुएशंस आ रहा था, मेरा फियर क्रिएट हो रहा था, और अगर सामने वाले का वैसा नहीं हो रहा था। बट देयर वाज अ टाइम आई थॉट दिस कि किसी का सिलेक्शन कभी भी मेरे हाथ में नहीं होता। See, I'm sharing the psychology how it happens. So what else I can do apart from that? Guys, I'll share you this. Why I'm sharing you this? कोई भी चीज किसी के लिए भी एक जर्नी है। जैसे आप कुछ कर रहे हो, आपको एट अ टाइम उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, बट यू हैव टू डू इट। इट डजंट मीन कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप एक ही चीज पे अटके रहो। मैं बीइंग अ ट्रेनर, मैं ऐसा सोचूं कि मेरे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं तो ही मैं ट्रेनिंग दूं, तो दैट विल बी अ रॉन्ग केस। ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं हो सकता जिसके सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं। बीइंग अ स्टूडेंट, आपको सेम प्रोस्पेक्टिव अपने लाइफ में रखना चाहिए। इफ यू आर ट्राइंग समथिंग, आपको उस चीज में एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सक्सेस मिले ऐसा जरूरी नहीं है, but it doesn't mean that you have to leave it. There will be a proportion of that. Like for me, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं at a time, कुछ स्टूडेंट नहीं होते, बट क्या वो मेरे हाथ में है? हाँ, कभी मुझे पता चलता है, I can share to you guys कि यहाँ पे इंटरव्यूज हैं और वर्क करता भी है, बट वो मेरे हाथ में नहीं होता at the same point of time. Same way, जैसे लाइफ के फंडामेंटल सबके लिए जैसे ग्रेविटी होती है, इट्स फॉर यू एज वेल। आप कुछ ट्राई कर रहे हो, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू डीमोटिवेट योरसेल्फ। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी टू मेक यू समथिंग बेटर, और यू गोना गेट द फ्रूट आफ्टर सम टाइम। शायद उस चीज का फ्रूट आपको बाद में मिले। सो लाइक उत्कर्ष हैव शेयर्ड, मैंने भी जब ये देखा बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी बार नहीं हो रहा और कभी बार सडनली बहुत सारे स्टूडेंट का होने लग रहा है, एंड एक पैटर्न भी है एट अ टाइम। जो हमारा पॉपुलेशन साइज है हर चीज का, तो हर सेक्टर में जो कैंडिडेट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और इनटेक कैपेसिटी, उसमें गैप है। 30% इनटेक कैपेसिटी है और 100% लोग हैं। तो आपके लाइफ की साइकिल आपको रोकनी नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। आप सभी को एक चीज सोचनी है कि लाइफ सबके लिए एक तरह से एक ही लॉ काम करता है सबके लिए। नन ऑफ देम और नन ऑफ पीपल यू आर सीइंग दे आर समवन कि उनको 100% सक्सेस मिल जाए हर वो चीज जो कर रहे हैं, बट फॉर श्योर अगर आप मेहनत कर रहे हो उसका फ्रूट आपको मिलेगा। मैंने भी स्टूडेंट्स को बाद में ये शेयर करना, इंस्टेड ऑफ ये झूठ बोलने की जगह कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही मेरे पास आ जाओ, मैंने ये चीज टाइम के साथ ऑब्जर्व की। जब सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उन्हें ये बोलना स्टार्ट किया कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, सो डोंट वेट फॉर दिस जॉब कि आप 6 महीने 1 साल वेट ही कर रहे हो, एंड फिर आप 6 महीने 1 साल वेट करने के बाद आप छोड़ दो, आप इस रोल को ही क्विट कर दो, या किसी भी रोल की तैयारी कर रहे क्विट कर दो। द बेटर वे इज आप अपने लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करो कि मैं 3 महीने अप्लाई करूंगा या 6 महीने, और 3 या 6 महीने में अगर मुझे नहीं मिलता है, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो 3 या 6 महीने में अगर आपने पैटर्न, बट उस 3 महीने और 6 महीने आपको बेटर करना है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं इतनी कंसिस्टेंसी दे रहा हूँ, क्या मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैं इस लीग में हूँ।
अगर आपको लग रहा है मैं उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा और मुझे कंसिस्टेंसी लाने में टाइम लगेगा और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तो आप एक जॉब ले लो। और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, आपने 3-6 महीने डिसाइड किए थे, अगर आपको नहीं मिल रही ये जॉब, लेट्स सपोज क्लिनिकल साइंस, so get another job, relevant job. It can be CRA, it can be PV, it can be medical writer, it can be CDM, it can be any job, but don't sit idle. खाली नहीं बैठना है। Worst thing you can do in your life कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, आपने कोई चीज सीख भी ली हो, वो सीखने के बाद आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप अपना बेस्ट दे रहे हो फिर भी, और उसके बाद भी आप कुछ टाइम देने के बाद 3-4-5 महीने के बाद आप खाली बैठे। योर टारगेट, नेक्स्ट टारगेट शुड बी कि अगर 3-4 महीने में ये नहीं मिला, 5-6 महीने में, तो ये मैं ले ही लूंगा इमीडिएट बेसिस पे, मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई फील, दैट ऑलवेज डूइंग समथिंग इज बेटर रेदर देन लाइक waiting for something best. The best is the journey. Sometimes you make it at that particular point of time you have decided. आपने डिसाइड किया था, उस टाइम पे आप मेक इट कर लेते हो, उसे पा लेते हो, और कभी कभार नहीं पाते। now little bit the world is getting competitive, but अक्सर मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, कोई भी स्टूडेंट क्यों कोई किसी चीज को छोड़ देता है, पहले बहुत एनकरेज होता है, वो सीखता है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी मतलब कुछ स्टूडेंट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, अप्लाइंग पार्ट में भी करते हैं, और 3-4-5 महीने अप्लाई किया, दे आर लाइक मार्केट में जॉब ही नहीं है, इंटरव्यू मिल ही नहीं रहा, मुझसे क्रैक हुआ ही नहीं, छोड़ो उसे, अब मैं कुछ और करूंगा। आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर करना होगा कि ये एक जर्नी है। एट अ टाइम मार्केट 30% लोगों को ही कंपनसेट कर पाएगा 100 में से, तो मैं कुछ महीने, आप डिसाइड कर लो इतने महीने दूंगा, नहीं मिलता मैं एक एक्स जॉब ले लूंगा, और इसका जो कंसिस्टेंसी है, जो मेरी लर्निंग, वो तो मेरे अंदर है ही, मैंने सॉफ्टवेयर सीख ही लिया है, मैं सारी चीजें वो कंटिन्यू करूंगा, अप्लाई करता रहूंगा। जैसे ही उसमें मुझसे इंटरव्यू क्रैक हुआ और जैसे ही जॉब मिली, मैं एक्स जॉब छोड़ के इसमें अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दूंगा। सो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, हमें कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, दैट हाउ द एनर्जी वी हैव गैदर्ड, उसको मैं एक दिन छोड़ दूं, सारी चीजें डिस्ट्रक्ट कर दूं, उसकी जगह मैं उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करके आगे यूटिलाइज कर लूं। And the knowledge you are getting after learning SAS, the best part is you got the fundamentals of programming. अब चाहे आप R करो, अब चाहे आप Python करो, अब चाहे आप Java करो, you are already having the fundamentals of programming. ये if then else condition, operators, do loop, conditional statement, आप जाओ कोई भी language पकड़ो, R ले लो, Python ले लो, you can relate easily. Whatever topics you have learned in SAS, 40% or 50-60% of topics you will find in R as well and Python as well. Only because these are different languages. तो लिखने का तरीका, बट वो टॉपिक्स उसमें भी हैं, एंड यू कैन इजिली रिलेट विद दैट। सो ऑलरेडी यू गाइज आर गैदरिंग द टॉप लेवल ऑफ द मार्केट, आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। व्हेन दिस गोना वर्क, नो वन नोस, और कोई प्रॉमिस कर दे कि भाई ये इस टाइम पे काम करेगा, अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो ये टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, एंड इट्स लाइक 30% ऑफ ट्रेनर एंड 70% ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज आपका ट्रेनर, आप चाहे मुझसे लो या किसी से भी लो, वो कम या ज्यादा हो सकता है अपनी स्किल में या मोटिवेशन में या किसी भी चीज में शेयर करने में, बट इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट कहीं पे भी हो, लाइफ के किसी भी फेज में, आप मैनेजर के साथ हो, हमेशा ये कंट्रीब्यूशन लेवल हमेशा यही मान के चलना, सामने वाले का 30-40% कंट्रीब्यूशन होगा मेरी जर्नी में, ज्यादा से ज्यादा 60-70% मेरा होगा। अगर ये रेशियो लेके चलते हो, यू विल गेट द सक्सेस इन लाइफ। व्हेनेवर यू स्टार्ट अज्यूमिंग एनी पॉइंट ऑफ लाइफ की 70% सामने वाले का हो और 20-30% मेरा, दैट इज द वे टू फेलियर इन लाइफ। सो मैंने उत्कर्ष में आई वुड लाइक टू शेयर एक पैटर्न देखा था, दैट मैं उन्हें जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद वो अपने एफर्ट्स भी डालते रहते थे, एक्टिवली ट्राई करते रहते थे। उसमें से एक एफर्ट मतलब अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत चला गया था उत्कर्ष, दैट वन राइट, अ स्मॉल मिस्टेक, ही मेड इट राइट। आप ट्राई करोगे तभी तो कुछ पाओगे, आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा चीजें। लेट्स क्विकली कम टू अ क्वेश्चन उत्कर्ष कि इफ समवन वांट टू गेट अ जॉब इन CDM, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? The skills are like in the CDM, like it depends on that the phase. Now I have said there are two departments. One is core CDM and another is CDM programming. So for CDM programming only SAS, and for core like you are from like life science background. Okay, so Utkarsh, as you took training from me for statistical programmer role, and you have given this interview in CDM. So did they ask this question to you? No, they simply asked me the SAS question because we have to use SAS. So as a fresher level, you have never worked on statistical also and CDM also. As a fresher level, they will ask the SAS questions. But if we are going for statistical programmer, you have to know the HDTM, ADAM and TLF, like minimum 1 or 2 like soft activity you have to done. Minimum, this is the now the requirement. It means you are saying that if someone have taken the training of statistical programmer,
he is 100% eligible for the CDM programming role, right? Now, Utkarsh, we'll quickly take the questions of our students as well. So guys, everyone just turn on your cameras. We would like to see you as well. तो हमें पता चले आप कहीं सो तो नहीं रहे थे पिछले 1 घंटे से. Yeah, we can have questions one by one, guys. You can raise your hands one by one. Question is like how much time interval freshers interview happen? Like अगर इस महीने में हुए तो कितने टाइम के बाद फिर से होंगे? It is not like based on the time interval. Like mostly it depends on the company. Like what are the requirements? उनके चलते रहते हैं, ये हमें भी नहीं पता रहता. लेकिन internally they will conduct mostly like in June, July, September, October also. So it depends on their requirement. Like what is the numbers? Like 10 people, 20 people, something like that. Like how many people they hire at one time? Like 10, I say it depends on the requirement. Like 10, 20 numbers are not fixed. But suppose if they want, like they do the hiring which is not in very large number, like because in this field like hiring are like very limited, like as a fresher level. After that you can get, but you have to be the best in that you can perform. So if I have to share with my experience, I have seen a lot of hiring. An average pattern what I have seen, that is, Mayur, the number can be 10 to 15. Even in my scenario, even this recently interviews happen in Cinos or efficacy in anywhere. So 10 to 15, this is an average number I have seen. And if it is like sudden hiring, it can be 2 or 3. Like जब उत्कर्ष आपका हुआ था तब वो नंबर कितना था? 2 या 2 या 3 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, right? I think. So it was like जब when I was hired तो the vacancy is 2 only. इंटरव्यू कितने लोगों का भी हुआ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं हायर हुआ था तब 2 लोगों की वैकेंसी थी. What I can understand from this, उत्कर्ष, की जब एक पैटर्न वाली हायरिंग होती है तब एवरेज नंबर 10 to 15 जाता है, जैसे कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है. सो मयूर, हाउ द हायरिंग हैपेंस, कंपनी ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुकी होती है. ये प्रोजेक्ट है, इतने फ्रेशर्स लेने हैं, एंड बिकॉज ये साइकिल चलती रहती है, राइट? एवरी 1-2 years पीपल विल गेट प्रमोटेड, अगेन दे गोना हायर. तो साइकिल नीचे से ही स्टार्ट होनी है. सो वो प्रोजेक्ट और सारी चीज़ों के हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे पहले ही कि ये 1 month हम CV कलेक्ट करने वाले हैं, या ये 15 days जहाँ से भी नेट से या कहीं से भी रेफरेंस है, ये 1 month हम हायरिंग के लिए देंगे. लाइक दे गोना टेक इंटरव्यूज एंड 15 days में हम फाइनलाइज कर देंगे इनमें से किसको लेना है, एंड ये नेक्स्ट मंथ तक या लाइक आफ्टर 20 days वी गोना ऑनबोर्ड देम. ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड हो जाती है. इसमें कोई सोचता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी आपको इंटरव्यूज में अगर मिल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं तारीख को दूं या बाद में दूं, बिकॉज कंपनी का तो फिक्स है और ऑलरेडी उनके पास काफी सीवीज और लोग होते हैं. मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था उत्कर्ष, मैंने कंपनी को ऐसा बोला कि कैन आई गिव द इंटरव्यू. मैं सोचा कि थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ, मैंने 2 week बाद का टाइम दे दिया. कंपनी ने मुझे, मतलब वो बंदे ने मुझे बोल दिया कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, HR थे, कि हाँ आपका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक अरेंज कर देते हैं. बट उन्होंने जो इंटरव्यू कंडक्ट करने थे कर लिया और मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं. फिर मैंने रिवर्ट मांगा तो इसलिए क्योंकि कंपनीज का फिक्स होता है, व्हाई दे विल गिव यू द वी हैव टू प्रिपेयर. लाइक हमें पहले से तैयार रहना होगा. कभी शायद इंटरव्यू 1 घंटे बाद भी हो तो हमें हाँ बोलना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर वी कैन नॉट डिमांड आवर सेल्फ समथिंग, क्योंकि अभी हम फ्रेशर, अभी हमें कुछ आता नहीं है. अभी मतलब हमें जॉब की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू देम. वो दे कैन हायर एनीवन, दे कैन ट्रेन देम. तो एज अ फ्रेशर लाइक वी हैव दैट करेज एंड रिस्पांसिबिलिटी कि वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ. अगर इंटरव्यू हमारा 1 घंटे बाद भी हो रहा है तो भी हम मतलब एक नॉर्मल परफॉर्म कर सकें. वैसे इतनी जल्दी होगा नहीं इंटरव्यू, मिनिमम 1 day तो देंगे, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर. लाइक हाय उत्कर्ष, I had a question that is your company getting new projects? Like, is your team getting you're hiring more people? Is that so, or is there limited opportunities? The question is regarding supply and demand. That more people are learning SaaS. Like, if one person is leaving your organization, only that one person is getting replaced, and new people are not getting hired. So, is that so, or there is more? Your company is getting more projects, and people are new people are getting hired. In my team, like CDM programming, like I have seen like hiring last year and this year I have seen the internship. They have taken internship from the college, but hiring last year I have seen 9 hiring are there. So 9 new people have come and for this year they have taken intern. So like it depends like on the company policy also. If I have to answer your question, Suraj, so is company, I'll break down your question one by one. So one question was, is company is getting new projects? One question was that. Second question was that ki person is leaving the company, is the hiring is happening for that only? So no, hiring doesn't happen in that way. If one person is leaving the company, one hiring, that is not the flow. And coming to company is getting the project, obviously that's how they are, like since long
people are like becoming manager, director, VPs, right? Because one project will not go for 40 years. Max, it can go for maybe 3, 4, 5, 6 or 7 years. It's gonna over, right? These CRO companies are already having lakhs of existing employees. So how come within one project, or that also didn't go for long years, so they can compensate them or they can pay them. So projects keep going because companies are bidding for projects, right? So some of the company gonna win the bid, right? And they're gonna get the project. So some companies will bid for projects and some companies have their own projects. That's how this project system goes. So obviously project system gonna go. Now coming to the hiring number. So it can depend upon many, this is very technical question. It can be very accurately can be answered by manager, director or VP, senior level of employees or the HRs, because it depends upon how many projects the company bid and they got it. If they are bidding it, so then the numbers can be more. On the basis of one company data, we cannot judge, or on the basis of one single year. It depends upon the whole scenario. Now coming to, so let's suppose if company have bidded, all these CRO companies are there. Some gonna lose that project, some gonna get that project. So obviously some companies gonna do hiring. The hiring will never go like out of the world, right? Within the CROs only. So in your case, as per your question, the project question, yeah, obviously projects gonna come every time, new project. And how many hirings and replacement? At the time of replacement, they need quickly a person. Let's suppose Utkarsh is having 2 years of experience and he got an offer of 12 LPA from another company or 15 LPA. And he's joining, or he put his resignation and he'll be on notice period for 2-3 months. So company will ensure within this 1-3 months, we need at least a similar level of, knowledge of candidate or employer, so that a candidate can compensate, because already project is going on. So that hiring is quick hiring. So whenever someone is leaving the company, तो उसके लिए replacement हमें quickly चाहिए होता है. But in case of fresher hiring, that is a pattern hiring. जैसे मैंने बोला कि company का decide रहता है, ये month में हम hire करेंगे, ये month में interview लेंगे, then we gonna put them on project. But again, this is a very good question. Maybe in the next broadcast एक हम और session करेंगे. I'll try to bring or have some manager with us, and maybe most probably at that time for sure I'll try it within 1 month only. And maybe at that time we can get better clarity over this. ये project system और ये सब कैसे चलता है. Or if you have any like HR connection, so they will also have some this idea, because HR also a part of the. That's correct. HR and especially I think senior level of employees, especially above manager. So they have very much clarity on this. I have one more question, Utkarsh, that I have completed 1 year in pharmacovigilance. If I compare myself to the fresher, what are the opportunities I will be getting? Is it more? Is it high? So like if you have like PV experience, so what you can do, suppose if you are not getting the statistical or the SAS job, till then you can continue in PV in the same company, and after that you can first you try internally, because internally you have a good option if you learn the SAS. If you try internally, it is the best option. But if you don't get internally, then if you are applying for different company, so if you see if that company is good, so you apply in that. But if you don't have that relevant experience, so you can go in pharmacovigilance in that company and then internally look for the job. But do you feel like, because if you are internally applying, then it is easy for you as compared to externally. Like the problem is that my company is not having that vacancy of SAS. They don't have that branch. Like so that's I'm telling now. So go in any big CRO. If you are not getting SAS, so go in the PV only. PV, every big CRO have their vacancy. So if you go in the PV, continue the job, and after some time, whenever there the vacancy coming, so then apply there. Either you have the PV job already there, then internally you can get the best opportunity. I have received call from your company as well for PV, but I have refused them regarding that, and I have asked the HR that can I get the job for statistical programming. So she was so that we don't hire freshers. So that's why I'm saying that, because I have also applied for the statistical only, but I have ended up CDM programming. So it depends on you. If you see in the long term, wherever you want. So if you are doing the PV also, so what you can do, like 1 year or 2 year, you will in the PV only, and you will connect managers internally. So if there is any internally opening, so they will consider you if you have that knowledge of experience, and you can like learn side by side also. So Suraj, here
I have something for you. So I have done a counseling of one guy, and he was having around 5 years of experience in IQVIA. I don't remember, the current role of him, like at that time on which role he was working, but he wanted to move into this statistical role. He was working on he was not in CDM, he was in some other role. I don't remember. So he done the one-to-one counseling with me. He needed some guidance. He already got the approval from the manager, and they were ready to take interview. But the thing was, this guy is having only tool knowledge or like software knowledge and domain knowledge of clinical SaaS, but he was not having the experience. But he was getting IJP, internal shifting. But the company was taking him as a 2-year experience guy, and he was having zero experience of that role. Company got agreed. Company told him, just bring something on the table, not more, but at least. He did the counseling with me, and I guided him little bit for the interview. Like, if you're not having that much experience and you are giving an interview with 1 or 2 year, company was ready to, like, how company was compensating. He was having 4 year or 5 year of experience. So company was counting his 4 year of experience for statistical role. It was totally non-technical as a 2-year experience, like 2 to 3 years. So in short, this was the benefit for him. Company was not totally taking him as a fresher because he was already an existing employee of IQVIA. So his 4 year of experience, they were counting as 2 years. The way Utkarsh have explained, right? Like, once you get into a company which is having the same roles in your company, if statistical programmer role is there, you are working on some other role, so somehow you're gonna benefit, but you should be ready to give the interview and perform in the interview. And the best part is, in that scenario, IQ was counting the experience, not fully, because if they are hiring for IJP and they are counting his fully 4 years, they have to give the very high salary. For IQVIA, the salary can go for 4 years more than 50 or 20 LPA maybe. Because IQVIA system, like IQVIA grading system, is different from other companies what I have seen. Other companies giving you senior role, senior statistical programmer role, let's suppose within 5 years, 4 to 5 years. IQVIA will give you senior statistical programmer role maybe 7-8 years. They take more years, but their salaries are very high. They don't give you the position early. Other company will give you that position within 5 to 6 years. IQVIA will give you that designation or position within 7 to 8 years, but their salaries are like very good, competitive. So maybe the way, in short term, you cannot say that you can get the benefit, but of course in long term, the way he have suggested, like switching into a company which is having these roles like CDM statistical, it's gonna benefit you for sure. Sir, I have a question that आपको plus 2 years हो गए हैं फोर्ट्रिया में एज ए CDM रोल, तो आपने कभी ये नहीं सोचा, ये थिंक नहीं किया कि मेरे को स्टैटिस्टिकल रोल पे स्विच करना चाहिए क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी और पेइंग भी अच्छा है, तो आपके मन में कभी ये नहीं आया? हाँ, आया है, उसके बारे में सोच ही रहे हैं, अभी देखो आगे क्या होता है। आप हायर होते हो स्टैटिस्टिकल रोल पे, तो आपको भी मतलब सेम ट्रेनिंग होगी या फिर आपको चीजें पहले से ही मालूम है, या फिर आपको डायरेक्ट? If you are like have a good experience, like you have a good exposure, so if you are like hiring as a experience, so इतनी ट्रेनिंग तो नहीं होगी, डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा, but little bit you will get, like, because I am working only on SaaS only ना, so I have like that exposure already, so लिटिल बिट तो सीखना पड़ेगा अलग से, ऐसा नहीं है कि पूरा ही मतलब तुम कर लोगे। हालांकि एक मतलब एज ए इंटरनली थोड़ा सा मतलब एक मतलब इजी रहेगा एज कम्पेयर टू हार्ड, बिकॉज अगर आप बाहर से ट्राई करोगे तो बाहर से तो आप फ्रेशर ही कंसीडर होगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन सीखना तो पड़ेगा, लाइक लर्निंग, यू हैव टू लाइक सेल्फ लर्न, चाहे आप मतलब किसी से सीखो या खुद सीखो, लेकिन लर्न तो करना पड़ेगा। सो ऋषि, मैं यहाँ पे आपको एक बिहाइंड द सीन शेयर करता हूँ। सो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है ऋषि? जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप स्ट्राइव कर रहे होते कुछ अच्छा पाने के लिए, राइट? जैसे कि किसी का भी एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज उत्कर्ष was planning for statistical but he got in CDM. अभी CDM में भी salaries काफी अच्छी होती है. For examples, in CDM also within 2 years you can get a salary of 12 LPA. 2 साल में आप 12 लाख का पैकेज ले सकते हो, 10 to 12 lakh. CDM में भी. I'll not name the company here, but one of our known ones, he is working with a package of this much. So क्या होता है कि now it's not about the package. Let's not go beyond the package. तो एक कंफर्ट आ जाता है. एट द एंड गोल हमारा ऐसा रहता था कि ग्रोथ वी सी इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी. अब क्या हो रहा है, अगर आप सीडीएम में प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो तो आप सैस पे ही काम कर रहे हो, तो टूल भी वही है जो सीखा है, काम भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सेम होता है. थोड़ा डिफरेंस होता है कि आप वहाँ पे एसडीएम एडम क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे डेटा पे सेम डेटा पे ही काम कर रहे होते हैं, बट थोड़ा पहले का वहाँ पे बात का काम. सो इफ यू आर गेटिंग ग्रोथ, इफ यू आर गेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इफ यू आर गेटिंग सैलरी एज वेल, सो हम थोड़ा कंफर्ट में रहते हैं थोड़ा सा.
for you the question is big because you are asking this question from outside. For Utkarsh the question is very small and smooth because वो जो 3 फैक्टर हमने डिस्कस किया, ग्रोथ, सैलरी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ही इज हैविंग दैट एंड ही नोज की डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, चाहे ग्रोथ के मामले में, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस, एंड ही हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ऑलरेडी मैं इस पे हूँ, तो फॉर मी दैट विल बी नॉट दैट मच डिफिकल्ट even if I have to. For him that is a choice now. Yeah, that's a part कि आप उस चीज पे नहीं पहुंचे exactly, आप उसके नियर पे पहुंच गए, so you enjoy those things or you get those things, right? and आप सेम चीज पे काम भी कर रहे हो, तो फॉर दोस्त लाइक जो फार्मेसी और लाइफ साइंस से है, सो आई विल सजेस्ट कि अगर उन्हें सीआरओ में कोई भी रोल मिल रहा हो, चाहे फार्माकोविजिलेंस, सीआरए, एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिकल, फर्स्ट दे हैव टू ट्राई फॉर दैट. अगर उन्हें नहीं मिल रहा तो एक बार वो कंपनी में एंटर कर जाए, अगर अच्छी कंपनी में मिल रहा है, सीआरए मिल रहा है वो, क्योंकि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, सीआरए का मोस्टली पीपल लाइफ साइंस से ही होता है, लाइफ साइंस और बी फार्मेसी. सो अगर उन्हें जो भी रोल मिल रहा हो, एक बार कंपनी में एंटर हो जाओ, फिर कंपनी में अपने आप मतलब साथ में जॉब चली रही है और अपना टाइम निकाल कर उसे सीखते भी सकते हैं, तो ये हमें एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट तो करेगा. एज कम्पेयर टू अदर फील्ड थोड़ा मुश्किल होती है, जैसे आई एम फ्रॉम बीटेक, तो बीटेक के लिए सीआरए, सीडीएम, कोर सीडीएम ये हायर इतनी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कोर फील्ड होनी चाहिए. तो अगर आप उस फील्ड से हो तो यू शुड ट्राई इन अदर फील्ड ऑल्सो. जो फील्ड एक बार मिल रही है उसमें चले जाओ, और आफ्टर सम एक्सपीरियंस लाइक फार्मा, जो भी फील्ड मिल रही है अच्छी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में नहीं, मतलब ठीक ठाक मिड साइज लेवल कंपनी में, तो एक बार उसमें चले जाओ तो खुद ही आपको एक्सपोजर हो जाएगा. आपको मतलब वहाँ लोग मिलेंगे तो आपको खुद ही मतलब ऐसा लगेगा कि अब थोड़ा एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो लाइफ साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए स्पेशली. नाउ I'll share one conclusion from my end, and I'll tell Utkarsh, I'll request him as well to share a conclusion quickly, and we can wind up the session. Now coming to my conclusion, what is your goal today? Maybe it can be your option tomorrow. जो आज आपका गोल है, कल वो ऑप्शन हो सकता है, but it happens mostly once you achieve that goal or once you get into something bigger. It should not happen कि वो कभी हो ही नहीं पाया, तो लाइफ में ऐसे नहीं रहना है. But you should not be कि लाइफ में सिर्फ मेरे यही होगा. See, if you see my journey, did mechanical, did design, worked on that, didn't got interested, left that, went into a startup, बंद हो गया, then finally found something stable that is clinical. I was very much interested, बहुत खुश था. It was the first job and it was in the beginning itself, it was remote only, work from home था. But after some time still I'm into that only. वो मेरे लिए एक सपना था, like वो पाना. फिर there is a time I started feeling that something more is there in life. तो जो आज आपका गोल है, कल वो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा. लाइफ बहुत बड़ी है. It's like way bigger you think. Going from one phase of life and transiting to another phase of life, वहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ता है. In terms of being consistent, कि सिचुएशन कैसी भी हो, बट यू आर कंसिस्टेंट. इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बेटर योरसेल्फ, कुछ भी चल रहा है आपके आसपास, आप अपने आप को बेटर कर रहे हो. नाउ दिस विल साउंड लाइक अ मोटिवेशन वीडियो. मैं खुद कई बार देखता हूँ तो सेम चीज हर कोई रिपीट कर रहा होता है, बट दिस इज अ ब्रूटल रियलिटी. जब भी आपको लाइफ में ट्रांजिशन करना होता है, सो यू आर द ओनली पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांजिशन. चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो. इफ यू वांट अ ट्रांजिशन, you need to fully take the responsibility. By taking the responsibility alone, it will not work. आपको steps लेने पड़ेंगे, actions लेने पड़ेंगे. Like let's suppose if you want to do a career transition, actively doing the practice, actively solving the questions, if like talk about the SaaS, actively increasing a network, actively becoming better every day. These things are very important. I cannot point it out one by one. You have to think about it खुद से. कोई भी चीज आप बेटर सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में बेटर हो, तो वो एक ट्रांजिशन होता है. देयर इज नो सिंगल थिंग दैट बिकम द रीजन कि उसकी वजह से आपका लाइफ में फेस चेंज हो गया. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जब आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया था मुझे ये लाइफ का ट्रांजिशन करना है, और फिर जो आप स्टेप्स ले रहे होते हो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपको आपका गोल अचीव करने के लिए. आई डू रिमेम्बर कि मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब वो अलग थी, जब मैं सीरियस हुआ तब मेरी जर्नी अलग थी, एंड जब मैं इसमें मतलब मुझे मिल गया तब मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे ये अच्छी चीज मिलेगी, बट आई गॉट इट. आई वाज अ स्टूडेंट हु वाज फेलिंग इन माय एकेडमिक, राइट, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा. इट वाज नॉट लाइक आई वाज डम और डल, आई वाज द सेम पर्सन. सो you are going to be the same person who gonna get the failures and who gonna get the, but at the time of you want transition in your life, you have to put efforts and you need to figure out कि क्या क्या चीजों पे मुझे एफर्ट्स लगाने हैं. एंड फॉर श्योर द ट्रांजिशन गोना टेक, जितने आपके अंदर फ्लॉज हैं उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा. फ्लॉज यानी
मतलब जितना ज्यादा, लेट्स सपोज किसी का कम्युनिकेशन पहले से बेटर हो, किसी का कम्युनिकेशन अब बेटर हो रहा है, किसी ने नेटवर्किंग पहले से शुरू कर दी है, कोई अभी शुरू कर रहा है, तो जितना ज्यादा आप मतलब अभी कोई चीज शुरू कर रहे हो पहले से आपके अंदर नहीं है या पहले से वो बिल्डेड नहीं है, इतना ज्यादा थोड़ा आपको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। एंड समटाइम्स आई बिलीव समटाइम्स लक फैक्टर भी होता है, लेकिन लक तभी काम करता है, लक उसी का होता है जिसकी मेहनत होती है। सो द टाइम, मतलब जब मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुका था उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे ऑफर्स मिलने लगे या इंटरव्यू क्रैक हो गए। बिकॉज पहले मैं बहुत तैयारी करके इंटरव्यू देता था, नहीं क्रैक होते थे। और जो मेरा एक एमएनसी में इंटरव्यू क्रैक हुआ था वो जस्ट मैं सो के, बिकॉज मेरी शिफ्ट थी एक नाइट शिफ्ट, तो मैं सो के उठ के देता था इंटरव्यू एंड दैट वेंट वेल। आई डिडंट प्रिपेयर्ड मच फॉर दैट, क्योंकि आप एक लेवल पे आने के बाद ऑलरेडी इतने डिफॉल्ट में आपका लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, आपके एफर्ट्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि अब आप कभी भी कुछ भी करो यू गोना गिव बेटर, आपने अपना बेस्ट दे दिया है। यू डोंट हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग और गेटिंग, आप जस्ट दोगे और वो चीज काम करेगी। बट वाई वी हैव दैट फियर, हमें कभी नहीं पता होता कि मेरे लिए चीजें कब करेगी, और हम अगर वेट कर रहे हैं दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर कॉलेज, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, गेट अ जॉब एंड वर्क for the what you want to achieve in your life. Let's suppose you want to get a statistical job or you want to become anything, work for that. Nothing is quick in life, and especially something which gonna change your generation, that can be never quick. जो चीज आपकी पूरी जनरेशन चेंज कर देगी कमिंग, वो कभी क्विक नहीं हो सकती। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस गाइस, आज आपके लिए गोल है जिसके लिए बहुत आप खुश भी हो सकते हो, परेशान भी हो सकते हो, बट कल आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। दिस इज द कंक्लूजन, मे बी आई हैव एक्सप्लेन इन अ बेटर वे और मे बी इन द वर्स्ट वे, बट या दिस वाज द कंक्लूजन फ्रॉम माय एंड। नाउ लेट्स समथिंग वी कैन हियर फ्रॉम उत्कर्ष। तो सर लाइक आपने जो कहा, आई एम लाइक 100% एग्री विद यू कि sometimes like when I was also at the initial stage I was also very worried, so मैं भी सर से मोटिवेशन लेता था क्योंकि मैं भी बहुत अप्लाई करता था। तो जब अप्लाई करता था नहीं मिलता था तो बुरा लगता था, तो मैं भी सर से मोटिवेशन लेता था। लेकिन मुझे मतलब ये था कि मुझे क्लियर था कि अगर मुझे कोई भी बड़ी कंपनी में अगर मेरे अकॉर्डिंग रोल मिल जाएगा तो मैं उसमें आराम से चला जाऊंगा। तो बिकॉज समटाइम्स वी डोंट हैव एनीथिंग एंड इफ अ स्मॉल स्टार्ट कैन boost our confidence and we can bring our technological use in that also, so it is also good, we should not like worried about that. So मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जर्नी थोड़ी हार्ड तो है क्योंकि हम because mostly these CRO companies hire from the college as intern, so they will convert that intern into that employee. So very like a small portion of jobs which are for freshers especially which are coming in the market. तो अगर हमें उस पोर्शन में आना है तो हमें एक तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा और दूसरा कि हमें फिर फील्ड ओरिएंटेड नहीं बनना पड़ेगा। जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर हमें चाहिए तो हम उसमें एक बार ले लें, फिर अंदर जाके एक बार हम देख सकते हैं कि अंदर जाके हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है, तो और अपने आप को मतलब अप स्किल करते रहें। और जरूरी नहीं हम सिर्फ क्लिनिकल सेस में जाए। आई थिंक सर लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स गो इन बीएफएसआई डोमेन आल्सो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये डोमेन भी अच्छी है, इनमें भी हम अपॉर्चुनिटी अच्छी है। SaaS was used because SaaS is an analytical tool. It used in banking domain also and insurance domain also. So there are other domains also. If हमें वहाँ मौका मिल रहा है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर उसके बाद हमें आना हो तो कम से कम एक जॉब तो रहेगी हमारे पास। So I would suggest like that. So you can see banking domain job also and insurance domain job also, financial. What Utkarsh is trying to say guys कि हमें कभी भी ऐसे like the horse is there right, straight ही देखता है, वैसे नहीं देखना चाहिए आंखों पे पट्टा लगा के। You should be open up जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, एंड इवन आपको इन जनरल डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस में कहीं मिलता है। लाइक उत्कर्ष, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, शी गॉट उन्होंने हमसे SaaS सीखा। द इंटरव्यू हैपेंड ऑन आर, थोड़ा बहुत उन्हें आर भी आता था, उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड शी गॉट हायर्ड फॉर डेटा एनालिसिस। सो उनके साथ भी मैं पॉसिबल होगा तो वी गोना हैव अ सेशन और ब्रॉडकास्ट, सो शी गोना शेयर हर एक्सपीरियंस। So yeah, you should explore more, and one suggestion I can give you कि एक्टिवली अप्लाई तो करते रहो। अगर टेक्नोलॉजी वे में अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अपग्रेड करना है, तो वो अपग्रेड होना चाहिए और पाइथन, क्योंकि अगर ये करते हो तो आप पे कंप्लीट पैकेज बन जाओगे। बट हमेशा ध्यान में रखना कि सिर्फ एक फैक्टर आपके आपको जॉब मिल जाए और आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो एक फैक्टर काम नहीं करता। टेक्निकल फैक्टर विल बी नॉट द इनफ फैक्टर। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्टिवली अप्लाई करते रहना है। एक्टिवली अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स यू आर रीचिंग आउट, यू आर इंक्रीजिंग अ नेटवर्क, और टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड कर लो थोड़ा सा इफ यू आर गेटिंग टाइम। ओवरऑल फैक्टर्स आर दैट, फिगर आउट सम पॉइंट्स। व्हाट आई फील कि क्या पॉइंट्स हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है तो किन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, चाहे ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद। सबसे पहला तो मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो।
एक टाइम ऐसा लगेगा कि बोर हो जाओगे कि मैं क्या ही प्रैक्टिस करूँ, सेम चीज को रिपीट कर रहा हूँ. नो वरीज, सॉल्व क्वेश्चंस. आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से डेली टारगेट लो कि मैं 1, 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सिनेरियो बेस. तो उसमें क्या होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में यू विल प्रैक्टिस, आपकी डिफॉल्ट में प्रैक्टिस हो रही होगी. दिस इज लाइक इंप्रूविंग योर टेक्निकल थिंग. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू एक्टिवली इंक्रीज योर नेटवर्क, रीचिंग आउट पीपल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस वक्त अगर आपके कोई साथ नहीं है, फील लाइक कि अब कैसे करेंगे, बट यू हैव टू वर्क आउट ऑन योरसेल्फ. These are some points which I am feeling and fix it out. आप देखो कि मेरे को कहाँ इशू आ रहा है. क्या मुझे टेक्निकल में मुझे लग रहा है कि मैं बेटर नहीं हूँ, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. क्या मुझे इंटरव्यूज नहीं मिल रहे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा. क्या मेरा कम्युनिकेशन नहीं बेटर है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा. फिगर आउट द प्रॉब्लम, फिगर आउट द सॉल्यूशन, वर्क ऑन इट. नथिंग इज कि ऐसा नहीं होता कि लाइफ रुक जाती है, कोई चीज इंप्रूव ही नहीं कर सकते. सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. सो उत्कर्ष, आर यू डन फ्रॉम योर एंड and we can wind up for today. Okay. So thank you, Utkarsh, for giving your time, valuable time and valuable knowledge to us, and thank you everyone for your time. That's all for today. Thank you everyone, and bye bye everyone.